So what is comprehension? Comprehension means the ability to read, understand and interpret a written passage. मतलब अगर हमारे पास में एक written passage आता है तो हम उसे समझे और समझने के बाद में हम क्या कर सके, समझने के बाद हम उसको like एक पूरे सेंस को समझ के उसके आंसर को भी easily लिख पाए. It is tested by giving you a passage followed by a set of questions. आपका टास्क है कि आप इन आंसर्स को अपने लॉजिक के हिसाब से पैसेज में से ही लिखोगे, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप नहीं दोगे. What are the qualities that are being checked? Number 1, reading skills. Number 2, understanding of ideas. And number 3, ability to summarize or infer. तो एक बात को हम ध्यान रखेंगे, जब हम अपने कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो हमें पता है कि हमारी चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल्स यहाँ पे चेक हो रही हैं. और जब भी आपका कॉम्प्रिहेंड वाला स्किल देखा जाता है तो आपके थॉट्स बहुत जरूरी होते हैं. ठीक है, तो जो भी वर्ड्स में आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, बहुत क्लियर सी बात है कि ये आपके ऑन वर्ड्स होने चाहिए. मतलब नॉलेज तो चेंज नहीं हो सकती. अब जिस बारे में पैसेज है, भाई पैसेज तो आप यहाँ पे वही रखोगे, तो नॉलेज को तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू पैराफ्रेज एंड यू नीड टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. अब नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर? The structure is one passage around 300 to 400 words, and I am expecting moderate level. I'm not expecting that it should be of high level. It should be moderate. 4 to 5 questions. Answers should be written in complete sentences, not in the bullet points. You will not write very short answers. They should be understandable. You don't need to think, okay, like the passage is there. It is AI evaluation. In AI evaluation, everything is already fed. Means it must have some keywords. It must have some keywords. It must have the length. It must have the length as well. When you write this, like when you read your paragraph, आप समझ के एक आंसर निकाल रहे हो, and the answer you are getting must be relevant to the question. So the keywords should be relevant to the question. For example, if it is talking about a policy, if it is talking about a kind of like a certain pollution, the words are already fair. If your words do not match with the answer, so they will get to know, the AI will get to know that you are writing just anything not relevant to the answer. The language should be formal, grammatically correct. That is very important because AI evaluation is there, so it is definitely going to catch your mistakes. If you make grammatical mistakes, if you make, like structural mistakes, you don't use comma or you don't know where to use exclamation mark. So punctuation is highly important here. And remember, this is the mantra is this, that do not directly copy from the passage, but write in the proper sense in your own way.